Namaste and good morning, everyone. Let's do the prayers first. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhurbhavaswaha Tatsavitravarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yo Naha Prachodayat Asto Ma Sadgamya Tamso Ma Jyotirgamya Mrityorma Amritam Gamya Om Sahna Bhavatu Sahna Bhunaktu Sah Viryam Karvavahe तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ओम शांति शांति शांति. Okay, let's open our Ved Panchashti in Hindi first. We are on page number 114, mantra number 36. This is from Yajurveda, and I'm sure some of you are familiar with this. When we do the Havan, we sing this bhajan. This is by Rishi Gautam and chand is Trishtupa. Om Bhadram Karnebhi Shrinu Deva Bhadram Pashyem Akshibhi Yajatraha Sthirai Ange Tushtuvam Sastanubhi Vyashemahi Deva Hitam Yadayu. हे प्रभु, आपकी कृपा से हमारी आयु भर कानों की सुनने की शक्ति बनी रहे, आंखों से आयु भर देखने में समर्थ रहे और इसी प्रकार सभी अंग स्वस्थ तथा निरोग रहें और आयु पर्यंत हमारी शारीरिक शक्ति स्थिर रहे तथा हम सुखपूर्वक जीते रहें. So this is a मंत्र, प्रार्थना मंत्र. So 5 देवों पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश की उपासना करते रहें. See, these are the देवतास, क्योंकि उन्हीं के आधार पर हमारा जीवन स्थिर है. उन्हें कभी दूषित ना करें. उनके विकृत होने पर हम स्वस्थ व सुखी नहीं रह सकते. Okay, our life is dependent upon those 5 great elements. In the footnote, Guruji wrote, Dev. Dev means देना, जो देता है, द देवता है, जो हमें जीवन प्रदान करें. 5 तत्व. वेद के इसी प्रसंग में श्रीमद् भगवद गीता के निम्नलिखित श्लोक हैं. 5 देवों के आधार पर ही जीवन टिका है. यदि कोई व्यक्ति वृक्ष की जिस शाखा पर बैठा हो उसी को काट रहा हो तो उसका परिणाम क्या होगा? इसी प्रकार जिन 5 तत्वों के आधार पर हम जीवित हैं उनको दूषित करें तो हमारा क्या हाल होगा? श्रीमद् भगवद गीता के निम्नलिखित श्लोक का यही भाव है. दिस इज फ्रॉम चैप्टर 3 वर्स नंबर 11. देवान भावयात्नेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयन्तः श्रेया परम वाप्यस्त. तुम अपने कर्म से 5 देवों को शुद्ध रखो और वे देव तुम्हें स्वस्थ रखेंगे. इस प्रकार एक दूसरे का ध्यान रखने से आप सब परम श्रेय को प्राप्त होंगे, हर प्रकार से सुखी रहोगे. भूमि तत्व शरीर का आधार है, जल तत्व रसना का, अग्नि तत्व दृष्टि का, वायु तत्व स्पर्श का और आकाश तत्व श्रवण सुनने का. Okay, so all these 5 elements, they are connected with the 5 senses. 5 तत्व आधार हैं. जग जीवन के मीत भूल कर भी नहीं करें उनके कुछ विपरीत. देव जिनका नाम है 5 तत्व वे जान, जीवन दाता हैं वही उनके आश्रित प्राण. कान का आकाश है,
रसना का है जल, पृथ्वी तन का देव है, संग देव हर पल। आंख देखे तेज से, स्पर्श वात से होए, वात मीन्स वायु। देवों को ना माने जो, ध्रुव नाश को गोए। देखें सुने आजीवन भाई, जीवन दीर्घ हो सुखदाई। पूजा देवों की कर पाए, कुपित न उनको हम कर पाए। Let's look at the English translation also. By your blessings, O God, may our ears keep hearing and eyesight remains intact all our life. And the same way, all our organs should remain healthy and free of diseases. Our physical strength should remain stable, and we may live happily throughout the life. May we remain in service and worship of the five devas: earth, water, fire, air, and ether, because these are the very basis of our survival. Let us never pollute them in any way. By their decay, we can never be healthy and happy. So again, the footnotes in English. Devas means to donate or give. The five chief elements of nature: the earth, water, air, fire, and ether. These are life-giving. Therefore, these are called devas, the gods. The life sustains on these five elements. If a person is axing the branch on which he is seated, what will be the consequence? If we pollute the five elements on which we survive, what would be our plight? In this context of the Vedas, the Srimad Bhagavad Gita too conveys the same thought in the following shloka in chapter 3. Maintain the five devas pure by your actions, and these devas will keep you healthy. The mutual care of one another taken thus will lead you to the ultimate credit. You shall remain happy in all respects. Earth element is the basis of life. Because of water element, there is taste. Because of fire or radiance, there is sight. Air is the basis of touch, and hearing is because of the ether element. Hence, revere the five devas, as these sustain life. Never pollute them. If they are polluted, we can never think of good health and happiness. Vital are the five elements to sustain life for all beings. Do nothing unwittingly even that may harm these. Devas, they are called. Know these five elements. Life-giving they are. The life on them depends. The earth is basis of body. Sound is based on ether. Air sustains sensation. Taste depends on water. Radiance results in sight. So is man-nature's relation. The devas who disregards, he heads to utter devastation. May we see, hear all life, live longer life in elation, and worship the sacred devas, saving them from pollution. So our rishis, our yogis, not only gave us these mantras to recite, they gave us the techniques to keep our body healthy also. That's why the yoga abhyas is so important. Clean the body internally. Do the pranayam. Do the tratak. Do all those exercises. Very, very important. Eat right. Act right. Think right. So it's not just only reciting the mantras, but doing our duties also. Let's look at verse number 37. Rishi Bhardwaj, and this is from Sam Ved. And we know that in Bhagavad Gita, Lord Krishna mentioned the summons from the Sam Ved. He said, I am. And this is in Gayatri Mantra, Gayatri Chanda.
ओम अगन आयाहि वीत्ये गृणानो हव्ये दात्ये निहोतः सत्सिहि बर्हिषि। हे प्रभु, हम आपका आह्वान करते हैं। होता, आप अपने दिव्य प्रकाश से हमारे हृदय को प्रकाशित करें। आयाहि वीत्ये, हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर गृणानः, हमें ज्ञान भक्ति आदि का वरदान दीजिए। हव्ये दात्ये, आप सदा हमारे हृदय में विराजमान रहिए। नि सत्से, श्रवण करो पुकार मम, देव करो स्वीकार। आओ मेरे चित्त में कृपा धार। तेरे दिव्य प्रकाश से हो प्रकाशित चित, ज्ञान से भरपूर होए हो ये कृपा नित। आप हमारे हृदय में रहें सदा विराज, होए विरह न क्षण एक, हे मेरे महाराज। ये है मेरी प्रार्थना, यही मेरी अरदास, तेरे चरणों में प्रभो मैं अनन्य हूँ दास। सुनो विनय मम हे रघुराई, मम चित्त में विराजो आई। प्रकाश तेरा वहां प्रकाशे, चित्त अंधेरा सब विनाशे। Let's open our English book also. So mantra number 37. O God, we call upon you. Enlighten our hearts with your divine light. Accept our prayer, please. Bestow upon us the boon of devotion and wisdom, and be enthroned in our hearts at all times. Okay, so this is what a Bhagat does. Instead of keeping the Maya in the heart, keeping the God in the heart all the time, not only sometimes. Accept my prayer, O Lord, I call upon thee. Dwell in my heart ever, being merciful to me with thy divine light. Enlighten my mind, fill this with wisdom, the largest I may find. Dwell in our hearts always, my Lord dear. Depart not for a moment, heed my humble prayer. Thus I implore, O Lord, hear my appeal fervent. Of thy feet always I remain a humble servant. This is my prayer, O Lord. Live in my mind and possess, enlighten it with thy light, dispel all the darkness. See, Hanumanji, when he opened his chest, what was there? That's how our heart should be. Our Ishta Devata should be sitting there all the time. Let's look at verse number 38. This is from Atharva Ved. Rishi Atharva, Chand Anushtum. ओम ये त्रिशप्तः पर्यन्ति विश्वारूपाणि विभ्रतः वाचस्पतिर्बलादेशाम तन्वो अद्ये दधातु मे। हे प्रभु, आपने 21 तत्वों द्वारा सृष्टि की रचना की, यानी 21 से 3 सपत. So when we multiply 3 with the 7, that's 21. 3 सपत, 21 तपत. 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 तत्व, 5 महाभूत एंड 1 जीव. हे प्रभु, आपने 21 तत्वों द्वारा सृष्टि की रचना की और उन्हीं द्वारा असंख्य रूप इस विश्व में सर्वत्र आपकी शक्ति से विद्यमान है. असंख्य रूप मीन्स विद द कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन. ऑल दीज काउंटलेस फॉर्म्स. उन्हीं तत्वों से हमारा शरीर भी निर्मित हुआ है. प्रभु, वे तत्व हमारे शरीरों को सशक्त बनाए रखें और उन तत्वों का गुण सदा यथार्थ कायम रहे. हम भी ऐसा प्रयास करें और तत्वों को
हानि ना पहुंचाएं। 21 तत्व सृष्टि के प्रभु रचे हैं आप, उनसे रचना जगत की कीन प्रभु ने आप। देह हमारा बना है उन तत्वों का देव, रहे सदैव सशक्त वह लगे आपकी सेव। जीवन के आधार जो 21 तत्व देव, जन को शिक्षा दीजिए करें उनकी सेव। अशुद्ध करें ना तत्व हम, रहें सभी वे शुद्ध, शुद्ध रहें जल आदि सब, होए देव ना क्रुद्ध। उपहास की ये बात न जान, अशुद्ध बया सब जगत महान। हमने तत्व हैं किए अशुद्ध, कोई भी तत्व रहा ना शुद्ध। जिस शाखा पर बैठे हैं हम, उसी को काट रहे हैं हम। And we can see that we have polluted the air, we have polluted the water, we have even polluted the Akash Tattva with all those bad sounds, the wrong language. So all the tattvas we have polluted. And that's why diseases keep on growing, unhappiness, stress, anxiety, worries, fear. That is the effect of that. Let's look at in English also. O God, you created this creation with 21 elements. By them alone, countless forms came into being, and by your strength, they are existing everywhere in the universe. So not only on the earth, everywhere in the universe. The same elements constitute our body as well. O Lord, may these elements, earth, air, water, ether, etc., keep us strong, and their quality should remain intact as it is. Let us strive to keep these pure and do nothing to sacrilege it or pollute them in any way. So 21 constituents, 3 plus sapat, 5 senses of knowledge, eyes, ears, nose, tongue, and skin. 5 organs for physical functions, mouth, hands, feet, rectum, and genitals. 5 chief elements, earth, water, fire, air, and ether. And 5 elements are the objects of senses: sight, sound, smell, taste, and touch. They are also called tanmatra. And one soul, self, the body, and this entire creation is made of these 21 elements. God made all elements, the 21 constituents, and himself with them formed the entire universe. With these very elements, the form of our body attains. Strong it should be ever, at thy service it remains. So the whole purpose of all this is that we should serve God, our creator, our master. The basis of life indeed, 21 elements, O Lord, enlighten the masses to serve them with regard. Pollute not the elements, always maintain them pure. Pure must be water, air, etc., lest the gods retaliate in air. This is no laughing matter. The world is heavily polluted. We degraded all elements. None of them is untouched. What an ignorance, brother. On the branch we are sitting, unmindful of consequences, the same we are cutting. It's a beautiful analogy given by our rishis. A person sitting on the same branch is cutting. What will happen to that person? We all know. Mantra number 39. And this is also very popular mantra when we do the Shanti Path. Rig Veda, Rishi Vashishta, and Chandis Trishtup. Om Shanno Bhaga Shamuna Shanso Astu Shannaha Purandhi Shamu Santuraya Shannaha Satyasye Suyamasya Shansaha Shanno Arema Purujato Astu.
हे प्रभु, मनुष्य को आपकी कृपा से इस जगत में धन, बल, बुद्धि, ऐश्वर्य, सुख, कर्म, स्वतंत्रता और अन्य जीवों पर अधिकार आदि बहुत कुछ प्राप्त है। हमारी प्रार्थना है कि आपकी प्रदान की हुई शक्तियों, समृद्धियों का मनुष्य से दुरुपयोग ना हो। That all the powers we have gotten, we should not misuse them. बल्कि इन द्वारा जगत में सुख, शांति और न्याय का विस्तार हो, उनसे किसी भी जीव को दुख न पहुंचे। हमारा धन शांति का कारण बने, हमारा यश भी शांति का कारण बने, हमारी बुद्धि सदा सुख का कारण बने, सत्य का बोलबाला हो एवं शांति का कारण बने। हे न्यायाधीशों के न्यायाधीश प्रभु, आपका न्याय सुख और शांति फैलाने वाला हो। The previous page, he has explained Bhaga means Aishwarya. शंसा, शिक्षा व प्रशंसा। पुरंधी, बहुत पदार्थ। रायः, धन। सत्य, धर्म, परमेश्वर। सुयमस्य है, सुंदर नियम से प्राप्त करने योग्य व्यवहार। अर्यमा, न्यायकारी। पुरु जाता, बहुत मनुष्य में प्रसिद्ध। प्रभु आपने जग रचा, मानव रचा विशेष। संपत देने बहु उसे, रही कसर ना लेश। See, this is all sampad for us. The wealth God has given it to us. Tremendous amount of wealth. उनका करे उपयोग वह, सर्व जगत के हेत। जीव जंतु सब हों सुखी, सेवक को अभिप्रेत। मानव का जो धन है और वह अधिकार, सेवा में ही वह लगे, जग में हर प्रकार। तब शक्ति से ही हो सकत, अथवा ना हो पाए। स्वामी ने कृपा कीजिए, जग सुखी हो जाए। सुखी करो जग को हे देव, धन बल जन का लगे जग सेव। जन का अपना जो भगवान, अपना नहीं जग का ले मान। सुख शांति जग में छा जाए, जो कुछ है सुखदाई हो पाए। So it's like nothing is actually ours, it's given by him. So these rishis are teaching us that detach and remember it's his and use it for his purpose. Dhan, bal, aishwarya, everything. Let's look at in English also this mantra. O God, by your grace, man has attained wealth, power, intelligence, comforts, luxuries, independence, dominance over other beings, and a plenty of other things in this world. O Lord, we pray, man must not misuse the powers and riches bestowed upon by you. Rather, these should be used to enhance comfort, peace, and justice in the world. No being should ever suffer from these power and riches. So these powers and the riches which we have should never be misused. Our wealth and fame must beget peace. Our intelligence must always be the cause of comfort. Upholding truth and peace. Hey, Judge of judges, O Lord, may your justice extend peace and happiness everywhere. God created the universe. Man is an exclusive creation. Bestowed him plenty wealth without any limitation. Must he utilize it in a way the entire world benefits, all beings may be happy, Sevak thus expects. The wealth of man and the power he attains must be spent in service
of the world by all means. Thy power alone can do so, otherwise utterly impossible. Bless us all, my Lord dear. May the world be blissful. Make this world happier. For service, power, wealth exists. What man considers his own, not his own, but universal it is. Peace, happiness may prevail. To service, all may be enthused. Whatever exists in the world must be uniformly used. This is the message from our rishis. Let's look at one more verse. This is also very popular, but often very misunderstood. Let's look at it, what Guruji is saying. Mantra number 40 from Yajurved by Rishi Vashishta. Chand is a Trishtup and it's also called Mritanjya mantra. Triambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarvukam bandhan mrityo mukshye ma amritat. Triambakam yajamahe sugandhim pativedanam urvarvuk ev bandhanad ito mukshye mam ut. So there are words meaning given over here. Triambak means Bhagwan, जिसकी दृष्टि में तीनों लोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष से परे सभी हैं. भू भुवा स्वा. यजा में है, स्तुति करें. उर्वारुक, खरबूजा. पति वेदनम, रक्षा करने वाला. ओम पर ब्रह्म भगवान त्रिलोकी के स्वामी सर्वत्र व्याप्त हैं. तीनों लोक भू भुवा स्वा उनकी दृष्टि में हैं. वे त्र्यंबक नाम से इसी कारण विख्यात हैं. हम उस पर ब्रह्म भगवान त्र्यंबक की सदैव स्तुति करते रहे. उनसे हमें सुकीर्ति और शक्ति प्राप्त होती रहे और मरण उपरांत मोक्ष भी. हम सदैव उस शक्ति और यश प्रदायक भगवान के गुणों का बखान करते रहें और उनकी रक्षा में रहें. मरण उपरांत हमारी सुस्मृति संसार में इस प्रकार बनी रहे जिस प्रकार पका हुआ खरबूजा बेल से टूटकर सुगंधि देता है और सबको अच्छा लगता है. तीन लोकों के दृष्टा, त्र्यंबक उनका नाम, कीर्तन उनका हम करें प्रातः से ले शाम. कीर्ति जन की बढ़त है, कृपा उसकी पाए, और शक्ति भी बढ़ते हैं शरणी जो जन आए. स्तुति करें हम बारंबार और करें यक्षगान. त्र्यंबक जिनको जग कहे त्रिलोकी के भगवान. त्रिलोकी में ना है कोई उस नजर से बाहर. तीन लोक को देख रहे क्षण व पहर दोपहर. त्र्यंबक तीन लोक के स्वामी, तीन लोक के दृष्टा नामी. शरण में उसकी जो जन आए, बहुर जगत में वह नहीं आए. The previous page, he says वैदिक शब्द त्र्यंबक उमापति भगवान शंकर का पर्याय नहीं माना जा सकता. अक्सर people think that त्र्यंबक means Lord Shiva. He says क्योंकि वेद अपौरुषेय. Let's look at the English translation also. Om. The Supreme Being is Lord of the three worlds and present everywhere. The three worlds, Bhu, Bhuva, Swa, are in sight of the Lord. Thus he is renowned as Triambak. We must extol and bear his glory in mind always. We may keep obtaining power and prominence from him, and also the liberation after this life. Let us keep glorifying his strength and virtues that bring us honor and dwell in his protection always. After the demise, our sweet remembrance may remain in the world the same way as a plucked ripe musk melon spreads its fragrance around and refreshes all.
God views the three worlds. Triambak is his name. Morning till evening, may we chant his fame. Prominence one attains, who obtains his grace, rises in power as well, his shelter who takes. Lord of the three worlds, let's admire him always. World calls him Triambak, we sing in his praise. Nothing in the creation exists beyond his sight. He views the three worlds, each minute of day and night. The Lord of all worlds, the viewer of those renowned, his shelter who sought, never to the world he returned. So these were the five mantra from 36 to 40. Let's do the Shanti Path. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaye Purnameva Vishishyate. Om Shanti 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 Om. Thank you very much.